सो आठवां क्वेश्चन है हमारा, थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स इज एडेड टू सेकेंड लेयर सो एज टू फॉर्म HCP और CCP structure. What is the difference between the addition of third layer to form this hexagonal closed package structure? चलिए इसका आंसर देखते हैं. So answer है, in CCP structure the spheres of the third layers are not aligned with those of the first layers or second layers. Hence the third layer is called C layer. The spheres of the fourth layer get aligned with the spheres of the first layer. Hence the fourth layer is called A layer. The resulting pattern of layer is called ABC. ओके, तो ये आंसर हो गया. नौवा क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 27 gmol forms cubic unit cell with age length of 405 picometer if density of the element is 2.7 cm cube. Which is the nature of cubic unit cell, FCC और CCP? आंसर है एज लेंथ इक्वल 405 पिकोमीटर यानी कि 4.05 इंटू 10⁸ मोलर मास है 27, डेंसिटी है 2.7 और फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. फॉर्मूला हमारे पास है Mn/A³ है, ठीक है, डेंसिटी का. और कैलकुलेशन करना है हमें फॉर्मूले से, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उसके ऊपर चलते हैं. 10वां क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर विद अ यूनिट सेल एज लेंथ of 28 picometer. How many unit cells are number of atoms per present in 200 ग्राम of element? Density of an element यानी कि 14.44 ग्राम क्यूब. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. given type of unit cell is BCC, as length of A equal 288 पिकोमीटर यानी कि 2.8 इंटू 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर. मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 200 ग्राम. फाइंड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट. ओके, तो फॉर्मूला हम लोग इसका ले लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट इक्वल x/P³. नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट्स. देखो पहला वाला फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, और नीचे वाला नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए, ठीक है. तो कैलकुलेशन करेंगे फॉर BCC यूनिट सेल n इक्वल टू फॉर्मूला 1 नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम्स वाला जो है, यानी 200 ग्राम्स इंटू 2 आ जाएगा अपॉन 44.40 ग्राम जो दिया गया है, यानी कि 2.84 इंटू 10⁻⁻⁻ जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 1.16 अपॉन 10⁻²4. नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेकेंड फार्मूला का यूनिट सेल निकालने के लिए, तो 200 ग्राम ऊपर अपॉन में आ जाएगा, सॉरी ऊपर नीचे अपॉन में आ जाएगा 44 जो सेम है वही, यानी कि इक्वल 5.80 इंटू 10⁻23, यानी कि नंबर्स ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम्स एलिमेंट इज 1.16 इंटू 10⁻24 और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम एलिमेंट्स इज 5.80 इंटू 10⁻23. 11वां क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मेटल कंडक्टर्स इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो ये हमारा आंसर है, मेटल कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तीनों के टाइप से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत पहले पढ़ चुके हो ना. इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स तो आपकी पुरानी जान पहचान है ना. तो ये हो गया, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स भी दिए गए. चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाई इज द कंडक्टिविटी ऑफ डॉप एन टाइप सेमीकंडक्टर हायर देन द प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन विद डायग्राम. तो an intrinsic semiconductor which is obtained by adding group 15 element to an intrinsic semiconductor which belongs to group 14 is called an n-type semiconductor. Example, silicon doped with phosphorus. N-type semiconductor contains an increased number of electrons in the conduction band. Consider the dropping of silicon with the phosphorus. Silicon has a crystal structure in which each silicon atom is linked tetrahedrally to 4 other silicon atoms. When a small quantity of phosphorus is added to pure silicon,
the p atoms occupy some vacant sites in the lattice is placed of silicon atoms. The overall crystal structure of Si remains unchanged. 4 of the 5 valence electrons of p are utilized in bonding the closed to 4 silicon atoms. Thus, p has 1 extra electron than needed for bonding. Therefore, silicon dope with p has more number of electrons in the conduction band than those in the conduction band in pure silicon. Thus, the conductivity of silicon doped with the p is the higher that of the pure silicon. The electron in the conduction band move under the uh, influence of an applied potential and conduct electricity. P atom occupy regular site of silicon atom. ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ये रहा, देख लीजिए. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्लेन द डायग्राम फ्रैंकल डिफेक्ट. व्हाट आर द कंडीशन फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल. सबसे पहले हम मिस्टेक निकालेंगे किसका, फ्रैंकल का. मज़ा आएगा. तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज व्हेन anions of an ionic compound is missing from its regular lattice site and occupy an interstitial position. Between lattice position, the cation are usually smaller than anions. Therefore, the cations occupy interstitial sites. The smaller cation is displayed from its normal site is interstitial space. It therefore creates a vacancy defect at its original position, and an interstitial defect and its new location in the same crystal. Frankel defect can be regarded as the combination of vacancies defect and interstitial defect. This defect is found in ionic crystals like zinc S, AgCl, AgBr, AgL and CAF. फ्रैंकल डिफेक्ट का ये रहा, देख लो. ये फ्रैंकल डिफेक्ट का ना डायग्राम याद करके रखना. आप पॉइंट के साथ अगर डायग्राम भी बना दें तो आपको उस पर अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब कंडीशंस क्या है फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट. ऑफ ओके. चलिए इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट. व्हाट आर explain the formation of vacancy through alveolant impurity with examples. देखो क्वेश्चन है, यानी कि 3 मार्क्स. अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 3 क्वेश्चन है. पता है व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सेकेंड है व्हाट आर इट, एंड थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज एल्वेलेंट. 3 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकते है ना. इस तरह से आते हैं, इसलिए बोलिए. तो आंसर लिखेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज व्हेन द फॉरेन atoms, that is atoms different from the host atoms, are present in the crystal lattice. There are 2 kinds of impurity defect, substitutional and interstitial impurity defect. तो पहले लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू alluvalent impurity. Vacancies are created by the addition of impurities of alluvalent ions, that is ions with oxidation state different from the host ions to an ionic solid. Example, consider a small amount of SrCl2 impurity add to NaCl during its crystallization. The added Sr2 plus ions in OS original solution equal plus 2 occupies some of the regular sites of Na plus host ions in original solution equal plus 1 in order to maintain electrical neutrality.
every Sr2 plus ions remove 2 Na plus ions. One of the vacant lattice sites created by the removal of 2 Na plus ions is occupied by 1 Sr2 plus ions. The other site of Na plus ions remains vacant as shown in the figure. तो ये देखो ये फिगर है, ठीक है, समझ में आया है डिफेक्ट? ओके, वैकेंसी डिफेक्ट का आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको बाकी चैप्टर्स की भी मिल जाए। इनफैक्ट बायोलॉजी के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री का तो आज स्टार्ट कर ही दिया है, और आपको फिज़िक्स के भी मिल जाएंगे। से डोंट वरी, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक भी कर दो यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। कोई डाउट तो चैट सेक्शन में लिख देना। ओके, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम।